In this video, we will try to understand homologous recombination and site-specific recombination. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जीवन के आधार की एक गहन वैज्ञानिक यात्रा। आइए आज होमोलॉगस और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के जटिल तंत्रों का विश्लेषण करें। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो मूलभूत प्रक्रिया है जो विकास, डीएनए मरम्मत, जीनोमिक स्थिरता और विविधता के लिए उत्तरदायी है। हमारी यात्रा ब्रह्मांडीय स्तर से शुरू होकर एक जीवित कोशिका के भीतर छिपे सूक्ष्म जगत तक जाती है, जहां क्रोमैटिन के विस्तृत परिदृश्य में डीएनए की दोहरी कुंडली निरंतर सक्रिय रहती है। रिकॉम्बिनेशन केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, ये कोशिका के अस्तित्व को बचाए रखने का एक अनिवार्य हथियार है। होमोलॉगस और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के बीच का अंतर समझना किसी भी लाइफ साइंसेज विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन व्यापक समानता पर निर्भर करता है, वहीं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को लक्षित करता है। इनकी ऊर्जा आवश्यकताओं और एंजाइमेटिक मशीनरी जैसे रेका या क्री रिकम्बिनेज में स्पष्ट अंतर होता है। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के क्लासिक हॉलिडे मॉडल का विश्लेषण करते हैं, जो आनुवंशिक विनिमय की नींव है। प्रक्रिया डीएनए की होमोलॉगस स्ट्रैंड्स के संरेखण और सटीक सिंगल स्ट्रैंड नेकिंग से शुरू होती है। इसके बाद स्ट्रैंड इन्वेजन होता है, जिससे हॉलिडे जंक्शन का निर्माण होता है, जो रिकॉम्बिनेशन का मुख्य केंद्र है। अंत में ब्रांच माइग्रेशन और रेजोल्यूशन के माध्यम से क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए अब मेसेल्सन-रैडिंग मॉडल की बारीकियों को देखें, जो एसिमेट्रिक इनिशिएशन पर आधारित है। ये मॉडल डीएनए संश्लेषण द्वारा संचालित स्ट्रैंड विस्थापन, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करता है। डी लूप का गठन और अंततः इसका हॉलिडे जंक्शन में रूपांतरण इस मॉडल की विशिष्टता है। अब हम डीएसबीआर और एसडीएसए मार्गों की ओर बढ़ते हैं, जो क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत के लिए अनिवार्य हैं। SPO11 एंजाइम द्वारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बाद 5 फीट से 3 दिशा में रिसेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। 3 फीट ओवरहैंग्स का निर्माण और उसके बाद सेकेंड एंड कैप्चर की प्रक्रिया मरम्मत को पूरा करती है। डबल हॉलिडे जंक्शन बनाम एसडीएसए का नॉन क्रॉसओवर परिणाम, इन दोनों के बीच का चयन ही जीनोमिक विविधता तय करता है। अब बारी है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की, जो एक अत्यंत नियंत्रित और लक्षित प्रक्रिया है। क्री-लॉक्सपी और एक्सर-सीडी जैसे तंत्रों में विशिष्ट एंजाइम और डीएनए साइट्स की भागीदारी होती है। हिन रिकॉम्बिनेज जैसी प्रणालियों में डीएनए इन्वर्जन एक मोलेक्युलर स्विच के रूप में कार्य करता है, जो जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः रिकॉम्बिनेशन न केवल जीनोम की मरम्मत करता है, बल्कि प्रजातियों के विकास और अनुकूलन की कुंजी भी है। इन प्रक्रियाओं का सटीक समन्वय कोशिका की जीनोमिक अखंडता, जीनोमिक इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। CSIR नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन आणविक तंत्रों का गहन अध्ययन ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। Welcome to our deep dive into the fascinating mechanisms of DNA recombination, spanning from the simplicity of prokaryotes to the complexity of eukaryotic cells. Recombination is essential for maintaining genome integrity, enabling evolution, and powering precise genetic engineering tools. In Escherichia coli, homologous recombination is a masterclass in DNA repair and diversity generation. It begins with RECBCD binding to double-strand breaks, scanning until it recognizes chi sites, which trigger the generation of 3 feet single-stranded tails. Once the tail is formed, RECA filaments assemble on the strand, facilitating a homology search and driving the strand invasion process into a donor duplex. The RUV-ABC complex then takes over. RUVA recognizes the holiday junction, while the motor protein RUV-B powers branch migration, and RUVC executes the final resolution. Eukaryotic cells elevate this process, particularly during meiosis, where programmed breaks ensure proper chromosome segregation. The enzyme SPO11 initiates these breaks, which are then processed by the mRN complex to prepare the ends for recombination proteins. RAD51 and DMC1 filaments form with the critical assistance of BRCA2, guiding interhomolog repair during meiosis or sister chromatid repair in somatic cells. To prevent unwanted crossovers, the BTR complex acts as a precision tool, dissolving double holiday junctions safely. Moving beyond homology, site-specific recombination relies on short, defined recognition sequences for precise DNA manipulation. Recombinases bind specifically to these sites, utilizing protein DNA intermediates to conserve energy during the breaking and joining of phosphodiester bonds. Depending on the orientation of the sites, the outcome can be integration, excision, inversion, or even translocation of DNA segments. Tyrosine recombinases, like those in the CRELOX-P, FLPFRT,
and lambda integrase systems are the workhorses of this field. These systems rely on a synaptic complex where precisely timed strand cleavage leads to the formation of stable holiday junction intermediates. The reaction proceeds via covalent phosphotyrosine intermediates, ensuring accurate DNA rearrangements without the need for external ATP. These mechanisms provide the foundation for modern genomic engineering, enabling us to rewrite the genetic code with surgical precision. From creating conditional knockout models to achieving tissue-specific gene deletion, these tools are transforming biological research. From prokaryotic repair to eukaryotic precision, these recombination mechanisms remain the fundamental language of genetic change. Welcome to our deep dive into site-specific recombination, a fundamental force shaping genomic integrity and evolution. We explore the precise molecular machinery that allows organisms to rearrange, edit, and repair their genetic blueprints with unmatched accuracy. Our journey begins with the lambda phage, an iconic model of site-specific recombination during bacteriophage infection. Integration relies on the recognition of specific sites, ATTP on the phage and ATTB on the bacterial chromosome. The lambda integrase, assisted by the integration host factor, IHF, facilitates the complex strand exchange required for integration. Following lysogeny, the prophage integrates, while excess protein ensures efficient excision during lytic induction. We now shift our focus to the fascinating mechanism of serine recombinases, which contrasts sharply with tyrosine recombinases. These enzymes orchestrate simultaneous cleavage, formation of phosphoserine intermediates, and dramatic 180-degree subunit rotation. Crucially, they achieve direct relegation, bypassing the need for a holiday junction intermediate, unlike their tyrosine counterparts. Key enzymes like HIN invertase, TN3 resolvase, and PHIC31 integrase exemplify the power of this efficient recombination mechanism. Nature uses these tools for adaptation. Consider how Salmonella evades the host immune system through phase variation. The HIN recombinase drives the inversion of the H region, altering the bacterial surface identity to survive within a host. This flipping between H1 and H2 flagellar expression is a brilliant example of adaptive advantage in host pathogen interactions. The Phi-S protein acts as a crucial accessory factor, modulating the inversion frequency to optimize bacterial survival. Beyond adaptation, recombination is vital for maintaining genomic integrity during the process of bacterial cell division. The XRCD complex ensures that chromosome dimers, which occur during replication, are resolved at the specific diff site. FTSK proteins activate XRCD, restoring proper chromosome segregation and ensuring each daughter cell receives a complete genome. We also observe specialized outcomes, such as gene conversion and repair mechanisms that defy Mendelian expectations. Gene conversion alters inheritance patterns, proving that genetic information is dynamic and subject to constant cellular oversight. Finally, break-induced replication serves as a critical pathway for rescuing collapsed replication forks, preserving the vital code of life. To synthesize our knowledge, let us compare the various mechanisms of recombination that maintain and diversify genomic content. While homologous recombination relies on extensive sequence similarity for repair, site-specific systems employ specialized enzymes for precise genomic modifications. Tyrosine recombinases utilize holiday junctions, whereas serine recombinases provide a faster, rotation-based mechanism for DNA strand exchange. Recombination is far more than a molecular task. It is a fundamental force driving evolution, adaptation, and biological complexity. Today, these natural processes empower genetic engineering, allowing us to edit genomes with surgical precision for medical and industrial breakthroughs. From the microscopic dance of enzymes to the global scale of evolution, recombination preserves the integrity of life itself.